हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी हियर ऑन अनअकैडमी. So today we are going to discuss the rest rules of subject verb agreement. Yesterday, I think we discussed it was day one, and today is day two. We discussed a lot of rules where we discussed subject verb agreement, how does it work, and so on, as well as we also discussed what is subject, what is verb, and what is agreement. If you haven't watched the session, please go and watch it. It is one of the most important sessions you must watch. So do watch the session and then decide upon this. Okay, so first of all, let me tell you that this subject verb agreement is a very important chapter, and you must know all the rules of subject verb agreement. So here I am trying to discuss and revise with you all the grammar rules possible, and today we will be discussing a very important subject, very important topic, subject verb agreement, date. Okay, so on an academy app you need to visit on the learners app. Go and टाइप माई नेम ANCHALSING. हाँ, मैं आपकी एजुकेटर हूँ आंचल मैम. मैं इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ आपकी. आप सभी को ऑलरेडी पता है, तो मुझे जाके अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए. अन अकेडमी पे फॉलो करने से आपको लाइव क्लासेस, लाइव लाइव क्विज, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड एनालिसिस इंग्लिश सेक्शन की, इन सभी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, इन सभी को सॉल्व करने का मौका मिलेगा, राइट? सो यू शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट एंड कम एंड जॉइन इट. सो सबसे पहले आप लोगों को AN लाइफ कोड यूज करना है, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट करना है. किस चीज के लिए अवेल करना है? प्लस क्लासेस के लिए, पेड कोर्सेज के लिए. देखिए, हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग हियर, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 75% of the portion of the syllabus, right? But 25% will still be left if we don't do plus classes, right? So do join the paid courses, do join the plus classes also for 25%, covering up the 25% of your syllabus, right? Now, how will you buy this and how will you be a part of paid course? Go and select your goal, whether it be bank, SSC, both. Go and select the duration plan. You want it for 1 month, 3 months, 6 months, or 12 months. If your plan is of 6,000 rupees, you can use your code AN Live here, right? The moment you use AN Live, you will see there is a deduction of 10% instant discount, and your fees becomes 5,400, which you can see over here. And this way you can then proceed to pay and buy the subscription. Okay, दिस इज माई स्केड्यूल. प्लीज हैव अ लुक ऑन द स्केड्यूल. 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे. वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस यूट्यूब चैनल पे मंडे टू फ्राइडे, राइट, 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में, पेड कोर्सेज में, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना जरूरी है. 11:30 to 1:30 PM आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में, जो कि है बिल्कुल फ्री आप सभी के लिए. इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट. 2 PM to 3 PM आप जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में. Now, Wi-Fi Study Bank Exam is also a YouTube channel. If you're a bank aspirant, you must join us over here, right? For better classes, for more and more preparation, for better understanding of the subject. And you can also join me on at Just English channel from 10:30 AM to 11 AM every Thursday and every Friday. Okay? चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं. आज हम सबसे पहला रूल पढ़ेंगे सेशन में. द फर्स्ट रूल सेज, if a statement has units of measurement or time, the verb here will be singular.
For example, 5 gallons of oil was required to get the engine running. $15 is the cost of this cake. 10 hours is enough for us to complete this project, right? Now, what does this rule says? It says that when there will be units of measurement, right? When there will be units of measurement, gallons, dollars, hours, or time. Measurement, yeah, time, right? Any one. Verb will always be singular. Was required, is the cost, is enough for us to complete this project. So this way we need to use this rule. जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह से अगर गैलन्स या डॉलर्स या आवर्स लिखे हुए हैं और आपके वर्ब प्लूरल है, if your verb is plural, are, have, were, if these are the verbs, then definitely that is the incorrect part, isn't it? That will definitely be incorrect. Why? Because the rule says that अगर किसी statement में units of measurement हो, समय को unit में दिखाया जा रहा हो, verb will always be singular. I hope you people understood this rule, right? So moving on to the next rule. The next rule says when words like some, all, half, none, more are used in a sentence as subjects, the object of preposition decides verb number. Okay. Now, in the previous session, we read about object of preposition where prepositional phrase does not decides the verb number. But here, when we have subjects like some, all, half, none, more, etc., the object of preposition decides the verb number. So let's read it out. Some of the notes, some of the juice bottle, some of you, some of none of the students, all the buses, all the chicken. Okay. So when some, none, all ये सब use हो रहे हैं, they are used as adjective of quantity as well as adjective of number, right? बट इनके साथ जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन लगे हैं, ऑफ द नोट्स, ऑफ द जूस बॉटल, प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर, क्लेम, स्टूडेंट्स, plural, buses, plural, chicken, singular. So these will be used according to the object of preposition. The verb will be used according to the object of preposition, right? Some of the notes are missing. Some of the juice bottle is gone. None of you will claim responsibility for this incident. None of the students have done their work. All the buses are going on strike. All the chicken is over. This way we can use the sentences, and this way we can use the object of preposition and a plural verb if preposition is plural, if the object is plural, and singular if the object is singular. Okay, it varies. So remember the words which are being used here. Some, all, half, none, more. They are when used as subject, right? Moving on to the next one. Indefinite pronoun. Now what is an indefinite pronoun? Indefinite. सबसे पहले जानते हैं indefinite word का मतलब क्या है. Something which is not definite, not defined. Something which is not definite or not defined and is used in place of noun. Now what are they? Used in place of noun. What are they? Everyone, everybody, everything, right? Someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, right? Everyone, someone, everybody, right? All these words. जहां पे हम define नहीं कर सकते, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं exactly? The subject is not definite. There is an indefinite thing is there. Okay, nothing is definite. So indefinite pronoun takes singular verb.
तो indefinite pronoun जब भी लगते हैं इनके साथ जो भी verb हम लगाते हैं वो हमेशा singular होते हैं. Everyone is here for the party. Everybody is doing good in their assigned work. This way we can use it. Okay, next. If one subject is singular, अगर एक subject singular हो and one is plural, connected with either or, neither nor not only but also, the singular subject will be placed first. So we will give position to the singular subject at first, and plural will be nearer to the verb, and so the verb will be plural in number. I'll explain you how. We have two connectors, either or here, right? We have two kinds of subject. One is singular, one is plural, right? So we will place the singular subject at first. Place singular at first, and make the plural one sit at the second position. Second position will be given to the plural one, and the verb will be nearer to the plural ones, right? So either the manager or his teammates are not doing the work satisfactorily. Not only the white peahen, but also the birds aren't in their cage. Neither the student nor the teachers. देखिए सभी जगह पहले सिंगुलर फिर प्लूरल, पहले सिंगुलर फिर प्लूरल. हमने कनेक्टर्स भी यूज किए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, इनके साथ यूज किए हैं, और ये हमारे हो जाएंगे प्लूरल वर्ब्स, राइट? इनके साथ यूज किया हुआ जो भी हमारा वर्ब लगेगा वो प्लूरल हो जाएगा, आरंट, वर, एक्सेट्रा. सो दिस वे वी विल यूज दिस रूल. ठीक है? when one subject is singular and one is plural, connected with either or, neither nor, not only but also, the singular subject will be placed first and the plural will be nearer to the verb, and so the verb will be plural in number. Okay, I hope it's clear. When two infinitives, what are infinitive verbs? What are infinitive verb? To plus V1. To dance, to sing, to love, to hate, to fish, to swim. These are all infinitive verbs. When two infinitives are joined and they are joined by and, the verb becomes plural in number. To hold and to dream require great skill. To read and to write are signs of an inborn talent, right? So ये दोनों infinitives, जब दो infinitives use होते हैं with the help of and, ये दोनों जब join होते हैं with the help of and, हमारे पास जो भी verb होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो plural हो जाते हैं. They become plural. अब gerunds की बारी. Gerunds क्या होते हैं? Gerunds are verb plus ing, right? When gerunds are used as subjects, it takes singular form of verb, but when two gerunds is used as subjects, they take plural verb. तो जब हम एक gerund का यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, तो वहां पे हमेशा हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. बट जब वहीं पे हम दो सब्जेक्ट्स यूज करते हैं और एंड से जोड़ते हैं तो वो बन जाते हैं प्लूरल. जैसे स्मोकिंग is injurious to health, singular. Swimming is good for health, singular. But dancing and singing are my hobbies. जब दो gerunds लगे और उनके साथ and हो तो वहां पे हम उनको क्या करते हैं? हम उनके साथ plural verb लगाते हैं. A collective noun can be singular or plural depending on its meaning. So the verb follows according to it. Okay. What is a collective noun? A group or a collection of something. तो ये group और collection में जरूरी है कि सभी कोई एक ही तरह behave करे? सभी कोई एक ही तरह behave करे? They can behave differently also. One wants to go this side, one wants to go that side, one wants to go this side, one wants to go this side, right? They cannot always behave together as a united form.
राइट, यूनिटी के साथ हमेशा नहीं बिहेव करेंगे। तो जब वो यूनिटी के साथ बिहेव करते हैं तो उनके साथ लगा हुआ वर्ब हमेशा सिंगुलर, बट जब वो यूनाइटेड बिहेव नहीं करते, यूनिटी के साथ बिहेव नहीं करते हैं, तो उनके साथ जो लगा हुआ वर्ब है वो हमेशा प्लूरल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, our team has worked several weeks on this project. Team has worked singularly, unity के साथ या बिना unity, unity के साथ, so singular verb. The staff of the company was working very hard. तो कंपनी के सभी स्टाफ की बात हो रही है क्योंकि वो सभी अच्छे से काम कर रहे थे। ठीक है, तो सिंगुलर। लेकिन वहीं पे जब हम बोलेंगे आवर टीम हैव वर्कड सेवरल वीक्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब बहुत मुश्किल से इन लोगों ने काम किया और अलग अलग तरीके से काम किया है। क्लियर? द स्टाफ ऑफ द कंपनी वर वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब सभी कोई अपने अपने तरीके से वर्क कर रहे थे, सबके तरीके अलग थे। इट कैन बी यूज बोथ द वे, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। रिमेंबर दिस, ओके? We usually come across a very famous example, which is the jury was present to give its decision. जूरी अपना डिसीजन देने के लिए प्रेजेंट थी, ग्रुप ऑफ जजेस अपना डिसीजन देने के लिए प्रेजेंट थे। इसका मतलब ये प्रेजेंट थे यानी ये यूनाइटेड हैं, इनका डिसीजन एक ही है। बट जब हम बोले द जूरी वर द जूरी वर divided in their opinions, यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस में सबका ओपिनियंस अलग अलग था। दिस इज वन वेरी फेमस एग्जाम्पल विच you must have come across again and again. Okay, titles of books, movies, novels and other similar works are treated as singular and take singular verb. अब देखिए, Cats remains a popular Broadway musical. Cats, cat को नहीं बोल रहे हैं, किसी म्यूजिक बैंड का नाम है शायद, राइट? एक पॉपुलर ब्रॉडवे म्यूजिकल, किसी म्यूजिक का नाम है या फिर, तो ये क्योंकि इसके साथ सफिक्स है, इसका मतलब ये नहीं है प्लूरल है, इसको हम ट्रीट सिंगुलरली करेंगे और इसीलिए वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर। बेड नॉब्स, देखिए नाम है बुक का, है ना? एंड ब्रूमस्टिक्स वाज माय फेवरेट बुक एज अ चाइल्ड, ये एक ही नाम है बुक का और इसीलिए हम इसको सिंगुलरली बिहेव करेंगे, कराएंगे, सिंगुलरली ट्रीट करेंगे और इनके साथ वर्ब भी लगा हुआ सिंगुलर हो जाएगा। वाइल्ड हॉर्सेस अगेन इज अ what song, was a surprise hit song for the Rolling Stones. Again इसको प्लूरल होने के बावजूद हम इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे। नेक्स्ट, the pronouns like few, many, several, both, all, some takes the plural form of verb. It is an exception. ये जब भी लगते हैं as pronouns और as adjectives, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। इट्स एन एक्सेप्शन। देयर वर few visitors, many of you have not submitted the forms yet, several of us will be attending the conference। ठीक है, तो several, many या फिर few जब भी लगते हैं इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड रिमेंबर कि सिर्फ सब्जेक्ट ही अफेक्ट कर सकता है वर्ब को, कुछ और मैटर नहीं करता है। आकाश अंबानी who owns Jio company is on his way of becoming a billionaire. ठीक है, I'm not talking about Anil Ambani, I'm talking about his son Akash Ambani. Okay, we are in a generation of Akash Ambani. So he also owns Jio company and is on his way of becoming a billionaire. Okay, so let's just give a quick revision to the rules which we did today. Please have a look on the rules which we did today. Quickly, this is just a synopsis for you. Have a look and then we are good to go. Please have a look, read it out once again, give a quick revision to whatever we read so that you remember and you apply these rules when you sit for the exams. Or whenever you solve any question, any paper, any practice set, any mock test.
I hope you people are revising and giving a quick revision to whatever you read just now. Read each and every example. If you want to note it down, you can note it down also, but do read each and every example whichever we have been discussing here. And the last one, as I said, say again, remember only the subject affects the verb and nothing else matters, right? So see you guys in the next session, in the next class. Do like, share, and subscribe the channel, and also like this session. And also, we will be coming up with some more classes, some more sessions, very interesting ones, where you will get grammar. Now you will be revising, we will be revising grammar together so that your exams becomes a success, and so does mine. So see you guys in the next class, in the next session. Till then, take care, goodbye, have a good day, bye bye.